Assalamu alaikum, sir. I am Rehan from Thal Public School 22 and Shop. I have been learning about sublimation and deposition processes, but I am confused. Sir, kindly clarify these concepts. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for your question, Rehan. You want to understand sublimation and deposition. Well, first you should understand what is melting and boiling, and then you will be able to understand sublimation. When you take the ice out of fridge and put it in the room, it melts and it becomes liquid. And when the same liquid gets more heat, you place it in the sun or you boil it, it becomes gas, steam. It evaporates in the form of gaseous state. Now, if you want to convert it back, the gas to the liquid and liquid to the solid. So there are three states. You will remove the heat from the gas, it will become liquid. You will further remove the heat from liquid, it will become solid. But in sublimation and in deposition, one of the stage, which is the middle stage, liquid stage, that is skipped. So sublimation is basically a shortcut. When a solid becomes a gas without becoming liquid, this process is called sublimation. So this is a shortcut. You skip one step, that is the middle step. Solid does not become liquid. It becomes gas directly. So this is called sublimation. And deposition is just the opposite of sublimation. When a gas becomes solid without becoming liquid, it is called deposition. So again, in deposition, the middle step is missed. The middle step is skipped. So it is again a shortcut. Right? Now I'll explain it with the help of some examples. First of all, you must have heard the word camphor. Camphor, the Urdu word for camphor is kafur. Kafur. Now, this camphor, people usually put this camphor in cupboards, almirahs, and it evaporates gradually, slowly. It gives beautiful smell, and in about months, a few months, it vanishes, it disappears, but it keeps the environment fresh. The second example is mothballs. You must have seen these naphthalene balls. फिनाइल की गोलियां भी इनको कहते हैं, white colored naphthalene balls. Usually, these naphthalene balls are kept in the clothes, in the cupboards, in the almirahs, in the suitcase, to save the clothes from the moths, from the insects. So these naphthalene balls and these camphor balls, they sublimate. They from solid, they directly become liquid. You will see the naphthalene balls vanishing in a couple of months from the clothes, but there will be no trace of liquid. कोई liquid उसमें नहीं होगा. Directly solid से वो गैस बन जाएगी, नेफ्थलीन जो है, फिनाइल गोली जिसको आप कहते हैं. इसी तरह कैम्फर जो है वो भी डायरेक्टली वो बन जाएगा. Then the third example is dry ice. Dry ice. First, you should understand what is dry ice. Dry ice is solid carbon dioxide. Carbon dioxide gas, when it is cooled at
minus 78.5 degrees centigrade, it becomes solid. So this solid dry ice, when it is kept in open, it becomes a white smoke. It turns into white smoke. It becomes gas. And it is usually used in weddings. You must have seen that at the stages and in different shows, this dry ice, solid carbon dioxide, is used for creating white smoke. It gives attractive, fascinating look at the weddings and at different shows. It gives foggy effect. Then next is freezer frost. You must have seen your uh, freezer at home. The sometimes you will see the walls and the top of the freezer is lined with the ice. Now that ice is solid. And what do the women do? Your mothers in the house, they open the door and leave it for some time. And what happens is that that ice which you see on the top of the freezer or on the sides walls of the freezer, that disappears after some time. But you don't find any liquid. It directly changes from solid ice to gas, water vapors. So this is basically sublimation. Now let's understand what is deposition. Deposition is just the opposite of sublimation. When gas becomes solid without becoming liquid, that is deposition. You must have seen frost on winter mornings. This frost is deposited on the grass, sometimes on your cars, or any other layers. This is a powdery white, powdery layer, thin sheet of snow, thin sheet of ice you see in the morning when there is severe winter, which in Urdu you call kohor, or in Punjabi you call kora or kakkar. So how does it form? It does not form. It is a solid. You must have seen kora. It is a solid, and it forms from the gas directly from the water vapors in the air. You can't see those water vapors because they are not liquid. They are in the gaseous form. So this frost is not made from liquid. Nobody has poured water. No rain has happened. No, it has become frost from the air, from water vapor which are present in the air. So directly from gas to solid, this is deposition. So frost is one example of deposition. Then again, I gave the example of ice depositing inside the freezer. Where does that ice come from? ये बर्फ कहाँ से आती है? जब इसका दरवाजा फ्रीजर का खोला जाता है तो बाहर से हवा अंदर चली जाती है, एंड दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स. उसमें वाटर वेपर्स होते हैं, यानी गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर, और वो वाटर वेपर्स डायरेक्टली आइस बन जाते हैं अंदर जाके, और वो आइस फिर
फ्रीजर के टॉप पे और साइडों पे लग जाती है, यानी वो गैस से डायरेक्टली आइस बन गई, सॉलिड बन गया, गैस से सॉलिड बन गया विदाउट बिकमिंग लिक्विड। लिक्विड नहीं बनता वो, ये वही हवा थी जो दरवाजा खोला अंदर गई और उसमें वाटर वेपर से वाटर वेपर्स लिक्विड नहीं बने, सॉलिड बन गए, तो वो आइस लगी उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, एक और तरीके से भी ये फ्रॉस्ट बनता है। इन विंटर व्हेन देयर इज वेरी हैवी फॉग and that fog when it touches some cold metals, I mean the roofs of your cars or any grill or even the electricity poles, बिजली के खंभे जो होते हैं, जब वो फॉग ठंडे मौसम में उनको टच करती है तो वो जो कि पहले ही बहुत ठंडे होते हैं, तो वो फॉग जो होती है दैट इज गैस, वाटर वेपर्स होते हैं, तो वो उनके साथ जब टच करती है तो इट बिकम्स आइस क्रिस्टल्स, उसके ऊपर वो सॉलिड बन जाती है गैस से डायरेक्ट, आपको ग्रिल के ऊपर आपको नजर आएगी। इवन ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन नॉर्दर्न एरियाज, नारायण, काकान, मरी एक्सेट्रा, अगर आप वहाँ पे जाएं तो वो जो नीडल्स होते हैं कोनिफर ट्रीज के लीव्स जो होते हैं उनकी टिप्स के ऊपर आपको वो आइस नजर आती है। वो कहाँ से आती है? वो फॉग जब उसको टच करती है तो वो डायरेक्टली गैस से सॉलिड बन जाती है। अच्छा, फिर ये जो क्लाउड्स होते हैं, इन द क्लाउड्स इट्स नॉट दैट द water vapors are formed to liquid only. No. Sometimes these water vapors are deposited on tiny dust particles and they become ice crystals and they form beautiful patterns. They are called snowflakes. दोबारा सुन लें, वाटर वेपर जो गैस की शक्ल में बादलों में होते हैं वो बारिश तो बनते हैं कतरे बारिश के, मगर वो समटाइम्स वाटर वेपर्स डायरेक्टली आइस बन जाते हैं। जो डस्ट के पार्टिकल्स एयर में होते हैं वो वाटर वेपर जो है वो एक वाटर गैस जो है वो डस्ट पार्टिकल के ऊपर डिपॉजिट होती है तो वो डायरेक्टली आइस बन जाती है, तो वो एक पैटर्न बनता है, उसको कहते हैं फ्लेक्स, स्नो फ्लेक्स। ठीक, तो ये कोई 4 एग्जाम्पल्स मैंने ईच सब्लिमेशन और डेपोजिशन की आपको दी हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा एक दफा ये बता देता हूँ आपको कि सब्लिमेशन इज चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड, स्किपिंग द मिडल स्टेप, लिक्विड वाला स्टेप स्किप हो जाता है। सिमिलरली डेपोजिशन इज चेंजिंग ऑफ गैस इनटू सॉलिड विदाउट बिकमिंग लिक्विड, अगेन स्किपिंग द मिडल स्टेप। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेपोजिशन एंड सब्लिमेशन। उम्मीद है रिहान आपको समझ आ गई होगी, और अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।